अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई कैश फ्लो इज द किंग, वाई कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट, एंड वाई वी ओनली नीड टू वर्क ऑन प्रॉपर्टीज और एसेट्स विच आर गोइंग टू गिव अस कैश फ्लो. अस्सलाम वालेकुम. So how is the morale? Very good. अच्छा, वेरी है, पक्की बात है. चलो, लेट्स हैव अ सीट. आप लोगों को थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो अंदाज़ा है किसी को? व्हाट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी? सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये है कि आज जो आपके पास पैसे हैं, जो वट एवर यू हैव राइट नाउ, दे विल नॉट हैव द सेम वैल्यू इन नेक्स्ट in 5 years from now. How do you find that out? Very simple. So let's suppose आज से अगर चले जाते हैं हम 5 साल पहले, 1,000 रुपये में कितने लीटर दूध आता था? 100 रुपये का था. चलो 100 रुपये का कर लेते हैं. तो इसका मतलब है कि 5 साल पहले 10 लीटर आता था. आज 1,000 रुपये में 5 लीटर आ रहा है, 4 लीटर आ रहा है, वट एवर दैट इज, राइट? सो दिस इज मीन्स के 1,000 रुपीज़ जो आज की तारीख में आपको जो 1,000 रुपया है उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी अगले 5 साल के बाद. तो विद टाइम आपका जो पैसा है वो टेक्निकली डेप्रिशिएट कर रहा होता है. सो दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस सेंस में इंपॉर्टेंट है, यू नो, वंस वी टॉक अबाउट कैश फ्लोज एंड वी टेल यू गाइस कि कैश फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट हैव टू पुट योर मनी इन समवेयर जहां पर आपको 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कैपिटल गेन्स मिल गए. वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स मेक इज दे थिंक दैट, यू नो, पुटिंग money in a long-term asset for only capital gains is actually going to give them the same amount of profit. You guys are following where I'm going with this? Yes. So for example, just for the sake of argument, हम इस बात को सोचते हैं कि let's suppose there is an asset which is actually a liability जिसके अंदर आपको कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा, and in 10 years time ये आपने 10 million का लिया, and in 10 years time it may get sold in 20 million as well. So your total net gain is 10 million, which is okay. 5 years में कर लो या 10 years में कर लो, whatever. 5 years कर लें चलें. So you are saying कि मैं 5 साल के अंदर जो है मैंने कितना गेन किया? 10 million. So that's almost 100% appreciation, which is good. 20% per annum. But similarly, now applying time value of money, that means this 10 million which you are going to cash out after 5 years, there's a difference, right? Up on the other hand, you have another property or any kind of asset which is giving you like same price bracket but will give you 5 million, 1 million per year in cash and only 5 million in capital gains. We will not assume 𝐂𝐥𝐥 is going to give more capital gains. We're going to just assume that it's also going to give us exact 10 million. So 5 million in cash flows and 5 million in capital gains. So technically, it is also giving us only 10 million. Now, which 10 million is better? Cash flow. Cash flow. Cash. Right? So understanding, once you're talking about rental income, it's not just about this and this. ये इससे ये चीज़ बराबर नहीं होती. Because this 1 million which you're receiving first year is much more valuable than this 1 million which you are receiving later on. And this 5 million is probably actually better than ये जो 5 million इसके अंदर से हम देख रहे हैं. So this 5 million की इसकी अगर 5 साल की करेंगे कि appreciation और निकालेंगे तो this 5 million is actually equal to somewhere like 7 to 8 million in actual term of time value of money. Does this make sense to you guys? Right? So ये एक बहुत major issue है कि जब भी हम wealth management की बात करते हैं, चीज़ें करते हैं, sometimes some investors are going to come to you and tell you कि भाईजान सियाने हैं ज़्यादा, यार 10 मिलियन तो इधर भी मुझे बगैर कुछ किए मिल जाएगा, बट ये 10 मिलियन जो है इसकी वर्थ इस 10 मिलियन से कम है. ठीक है?
So this explains that little concept, why cash flow is the king, why cash flow is important, and why we only need to work on properties or assets which are going to give us cash flow because of this time value of money concept.